Hello students, today we will be taking English subject. In our previous lecture, Unit 1, Lesson number 1.1, Don't Give Up. This poem we have learned and I have already explained to you two stanza of this poem. So today I will start with the third stanza. I read it, you follow in your textbook. Though the sturdy oak has known many a blast that bowed her, she has risen again and grown loftier and prouder. So, here loftier, this word has come, it means taller and stronger. See, in your textbook, below the poem, it is given. So, in this third stanza, the poet Phoebe Cary has given an example of an oak tree. She is describing the oak tree is so tall, strong and brave. Never made herself down due to attack or many blast. Here blast means stormy winds. तो इसमें पोएट जो है फॉबी कैरी क्या क्या बोल रही है, एग्जाम्पल दे रही है ओक ट्री का. Student, if you go and search in Google how the oak tree is, even if you cut the branch, another branch will grow from it. It will never die. So that only the poet Phoebe Cary is explaining in this stanza, that the oak tree is so tall and strong and brave. Even if stormy wind comes, stormy winds यानी बहुत ही जोर से हवा आना, चक्रीवादळ ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो, लाइक दैट टाइप. अगर इसको ये पेड़ को कोई काट भी देता है तो भी ये ओक ट्री हमेशा के लिए नेवर गिव अप. अनदर ब्रांचेस आर ग्रोइंग एंड अनदर लीव्स कम. नेवर मेड herself down due to attack or many blast. Here blast means stormy wind. They hit her several times and bowed her down, but she never lose her courage. Now as many times the oak tree is cut or the branches of the tree are bowing down. Bow down means ट्री का जो ब्रांच है वो नीचे की तरफ जब झुकता है उसको बोलते हैं बो डाउन. सो दे हिट हर सेवरल टाइम्स एंड बोर हर डाउन बट शी नेवर लूज हर करेज. इतना ये ओक ट्री को बार बार काटने के बाद भी वो अपना करेज नहीं छोड़, उसके पास में उतना करेज है. दूसरे ब्रांचेस ग्रो होते हैं, ये ट्री कभी मरता नहीं है. दिस ट्री नेवर ड्राई. शी सर्वाइव, regain herself again and grow taller and stronger with the time. She survived means another branches are growing on this oak tree and new leaves are coming, new stems are growing, and this oak tree try to regain herself. फिर से वो उम्मीद न छोड़ते हुए क्या करती है, ये ओक ट्री खड़ा रहती है, लोगों को शेल्टर देती है. ग्रो टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर. शी ऑल्सो फील्स प्राउड ऑफ हर सेल्फ. किसको? दिस ओक ट्री. पोएट ने किसको इंडिकेट किया इसमें? ओक ट्री को. दैट द ओक ट्री नेवर लूज हर पेशेंस विथ हर ब्रेव एंड करेजियस. शी इज ऑलवेज प्राउड ऑफ हर सेल्फ. From this poem, the poet Phoebe Cary tries to quote, difficulty in your life do not come to destroy you, but to help you realize your hidden potential and power. Now difficulties in your life do not come to destroy you. जो भी डिफ़िकल्टी यानी जो भी कठिनाइयाँ हमारे
जीवन में आती है वो हमें डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना, हमें नष्ट करने नहीं आती है। लेकिन जो भी आती है वो किस वजह से आती है, तो वो हमको हेल्प करने के लिए। क्योंकि अगर कोई कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आएगी तभी तो हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। उस समस्या का हल कैसे करेंगे उसके ऊपर सोच विचार कर सकते हैं। रियलाइज योर हिडन पोटेंशियल एंड पावर। लेट डिफिकल्टी नो दैट यू टू आर डिफिकल्टी। जो भी कठिनाइयाँ आपके जीवन में आती है, आपके कठिनाइयों को भी लगने दो कि यू टू आर डिफिकल्ट, कि आप भी कितने कठिन हो, कितने भी कठिन परिस्थिति में कोई भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। इन दिस केस वी शुड नेवर लूज आवर पेशेंस, वी शुड नेवर लूज आवर होप्स, वी शुड बी ऑलवेज ब्रेव एंड करेजियस, वी शुड नॉट गिव अप कि मुझसे नहीं होगा। बहुत ही अभी मेरे जीवन में समस्या आई है। फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी ऑल आर फेसिंग COVID-19. This situation has become so critical in Badlapur. Since for 4 months, all the children are staying at home. They must be willing to go out, play in garden and all, do mischievous. But the government has given order not to roam here and there without any work. So this is difficulties in our life. But since last 4 months, we all have kept patience and we have not lose our hopes. So we should not give up. Whatever difficulty come in your path or way, we should not lose our hopes. So whatever difficulties are coming, आपके रास्ते कोई भी कठिनाइयाँ आती है तो आपने निराश नहीं होना है। आपको उस कठिनाइयों का, वो समस्या का हल ढूंढ के निकालना है। नेक्स्ट स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा इज, इफ बाय इजी वर्क यू बीट, who the more will prize you, gaining victory from defeat, that's the test that tries you. Now in this fourth stanza, finally in this last stanza, the poet concludes by saying, concludes means इस पोएम को क्या कर रही है, एंड कर रही है, टू गिव एन एंड, कंक्लूड यानी टू गिव एन एंड. So finally in last stanza the poet Phoebe Cary concludes by saying that if one wins by easy means, it would be of no value because you will not learn the disappointment, losing, etc. So what she is trying to tell poet in this stanza, if one wins by easy means, it would have no values. अगर कोई भी इंसान अगर बहुत ही सीधे, बहुत ही आसान तरीके से अगर कुछ भी जीतता है तो उसकी वैल्यू हमारे जीवन में कुछ होती है क्या? नहीं होती है. अनलेस एंड अनटिल, बिकॉज यू विल नॉट लर्न द डिसअपॉइंटमेंट एंड लूजिंग. क्योंकि अगर हम बहुत ही आसान तरीके से कोई भी काम अगर सफल कर देते हैं, सक्सेस होते हैं, तो उसकी वैल्यू हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होती है. क्योंकि निराश होने, डिसअपॉइंटमेंट्स मीन्स कि हमको कैसे निराश हुआ जाता है उसका एक्सपीरियंस नहीं आएगा. लूज़ किसे कहते हैं? लूज़ कोई भी चीज़ नहीं मिली, अगर हम लूज़ करते हैं तो उसका एहसास हमें नहीं मिलेगा. तो यही चीज़ पोएट ने इस स्टैंजा में बताई है कि कोई भी चीज़ अगर हम मेहनत करके अगर हम करते हैं, अचीव करते हैं, तो उसका इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत होता है. हेंस विनिंग आफ्टर फेसिंग मैनी डिफ़िकल्टीज और डिफीट विल गेट द रियल अचीवमेंट फॉर यू. क्या बोल रहे पोएट कि अगर हम बहुत सी कठिनाइयों का सामना करके अगर हम कोई भी काम
सफल करते हैं, जीतते हैं, वी गेट सक्सीड, वी विन, दैट टाइम ओनली वी विल रियलाइज द रियल अचीवमेंट. द हैप्पीनेस which will come on your face will be unbelievable to see. और जीतने के बाद में देखो खुद हार्ड वर्क करके, टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, अगर हम कोई भी काम अगर सफल करते हैं तो जो चेहरे पे दिखने वाली जो खुशी है वो अनबिलीवेबल रहेगी, हम सोच भी नहीं सकते हैं. एट लास्ट गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट. When we learn to ride the bicycle, we will never understand about the wounds or the cut obstacle while riding the bicycle. It is very easy to defeat someone, but it is very hard to win. So, in this gaining victory from defeat, means it is very easy to defeat. किसी को हराना बहुत ही आसान है और उसी को बहुत ही हार्ड वर्क करके उसके ऊपर जीत हासिल करना बहुत ही कठिन है. यही है गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट, इसका मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल देखो एक बाइसिकल है, आप लोग व्हेन यू राइड अ बाइसिकल वी विल नेवर अंडरस्टैंड हाउ टू राइड दैट. स्टार्टिंग में आप लोग साइकिल चलाते हो, गिरते हो, वुंड्स यानी आपके घुटने हैं, घुटने पे आपको चोट लगेगी, हाथ पर चोट लगेगी. और जैसे जैसे जितने बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे साइकिल चलाने की, उतने बार आपको क्या होने वाला है, वो प्रैक्टिस होगी. एक बार गिरोगे, दो बार गिरोगे, लेकिन एट लास्ट आपको क्या होने वाला है, आपको साइकिल चलाना आएगी. तो यही है, अगर कोई इंसान माउंटेन पे क्लाइंब करता है तो पहाड़ पे क्लाइंब करने के लिए रोप का इस्तेमाल करते हैं. दैट थिक रोप, you must have seen. With that support a man is climbing the tree. लेकिन वो भी क्लाइंब करते हुए क्या होता है, वो पैर फिसलता है, बार बार गिरता है. बट ही नेवर लूज द कॉन्फिडेंस. दैट मैन नेवर लूज हिज कॉन्फिडेंस and he keep on trying, and after several practices at last he climbs the mountain. So we should be confident, brave and courageous. In this stanza the poet Phoebe Cary quotes that never to lose your confidence. If you don't get success or reach at your goal, keep patience in your life. So in this what the poet is trying to tell, that never lose your confidence. Confident यानी विश्वास, अपना आत्मविश्वास अच्छा होना चाहिए. अगर हमको कोई भी काम में सफलता नहीं मिली तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमने उसके ऊपर अच्छे से सोच विचार करके हमारे जो वीक पॉइंट है वो अच्छे से ढूंढ के हमने क्या करना चाहिए, उस पर जीत हासिल करनी चाहिए. तो ये सब करने के लिए एट लास्ट क्या चाहिए हमारे पास में, पेशेंस. पेशेंस यानी सहनशीलता, टॉलरेंस, ये हमारे लाइफ में होनी चाहिए. सो हियर वी हैव फिनिश्ड विद द पोएम डोंट गिव अप. दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम written by Phoebe Cary. Now the exercise. See, due to COVID-19 lockdown, all lectures we are taking online. So here I will, in this video only, I will be giving you the exercise. You have to listen properly and write in your notebook. So in your notebook you have to write the exercise, match the word with their meaning.
Patient, its meaning is capacity to tolerate delay. Sturdy, its meaning is strong and solid. Loftier, its meaning is taller and stronger. Victory, its meaning is triumph. 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 Next is answer the following question in 3 lines. How will you react when all your efforts fail? So answer to this question is, when all our efforts will fail, then we will never cry and work hard for next time. If we do great and good work but do not succeed, then we will try patiently. So by hearing the video, you have to write in your notebook the question and answer. Next question is, why does the young bird not give up flying despite falling? Birds may fall. Answer to this is, birds may fall when they are learning to fly, but their wings grow stronger. And the next they try, they can keep up a little longer than before. Now next question is, how has the oak grown over the years? Oak has tendency to bend as it starts growing. It has risen again and grown loftier. Loftier spelling is mentioned in the poem itself. Next question is, according to the poet, which test tries you? Answer to this is, according to the poet, gaining victory from defeat is the test that tries you. Next question is, name the virtue, 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 stretch in this poem. Answer to this is, the virtue stretch in this poem is to never give up in life. Next question is, in 3 sentences, explain the lesson taught by the oak tree. Answer to this is, if at the starting the oak tree bows down, then it goes by rising itself and grows loftier and prouder. Prouder spelling is also mentioned in the poem. Now next question is, pick out 6 pairs of rhyming words from the poem. First is crying, trying. CRYING, crying, trying. TRYING, trying. Stronger, longer. Beat, defeat. Known, grown. Won, done. Her, 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 prouder. Now, fill in the blanks with the correct degree of comparison. See, in 4th and 5th standard, in grammar part, we have learned degree of comparison. Positive degree, comparative degree and superlative degree. So, here I will give you some words in the positive words. For this, you have to write the comparative degree and the superlative degree. So, positive degree words, loft, 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 proud, 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 strong, 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 long, 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 little, 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 study, STURDY, study, patient, PATIENT, patient. So these are all the positive degree. For this you have to write the comparative and superlative
degree. This is very easy. You have learned in 4th and 5th also. Next question is fill in the blanks with the adjective from the poem. Now this fill in the blanks you have to find on your own. The dash oak has grown many a blast. The dash oak has known many a blast. You are beaten by dash word. The dash bird fall while flying. His dash trying brought him success. Now one more question, last. Your friend once fell down learning to ride a bicycle and now has given it up altogether. What do you think will be the poet advice? Write it down. So answer to this question is, the poet will advise my friend not to give up learning to ride a bicycle, but to keep trying patiently till it succeed. Till it succeed. Take one more extra question. I will give you one more extra question. Explain the example of the oak tree. Answer to this question is, the strong oak has been bent by many stormy winds, but has risen again and grown taller, stronger and prouder. Next question is, if you have tried to do something and not succeeded, what should you do? Answer to this question is, if you have tried to do something and not succeeded, you should keep on trying patiently. You should not give up. So these are the questions I have given you. Now there are some meanings that you have to write in your notebook. Give up, its meaning is to lose heart and stop trying. Then study, its meaning is strong and healthy. You beat means you win. Loftier, taller and stronger. Has known many a blast. Has survived many stormy winds. So here we complete our first lesson, don't give up. Answer to this question I have given in this video. This you have to listen properly and write it down in your notebook and take out the photocopy and send it on my mobile number. My mobile number is 9324313894. This is your homework and you have to do it. Tomorrow I want this homework to be ready. Thank you all of you. Have a good day.